Guys, welcome. आज clearly okay. Start the session. Uh, move start तुम्हाला हा पूर्व मग त्या युनिट हा रिलेट
नाउ देखो साउंड प्रॉब्लम रिजॉल्व होई ना एबे देखो प्रियांशु नाउ एसपी मिश्र प्रियांशु विकास प्रणाम विकास केमती अछ एबे देखिलो साउंड केमती अछि ठीक ठाक अछि मते लेट मी नो देन आई विल कंटिन्यू फॉर नाउ क्लियर साउंड एनी साउंड इशू ओके तो वन बाय वन आमे देखिबा देखो मैटर्न रो क्वेश्चंस अबाउट के मैटर्न जोंटे के डेविएंस ऊपर खाली आमे देखिथिले आमे देखिथिले कि पैटर्न वेरिएबल्स देखिथिले फाइव टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल देखिथिले देन सुइसाइड डरखाइम अकॉर्डिंगली सुइसाइड सो सबले सोशियोलॉजी रो देखिबो कि फर्स्ट चारिटा यूनिट हला मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस रो पार्ट एवं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आसे यस नाउ साइनोलॉजी ओके तो आज स्टार्ट करिवा काली आमे देखिथिले देखो क्वेश्चन केमिति आसी पेपर 1 रो आमे मु प्रथम पेपर 1 रो सॉल्व करबी पेपर 2 रो सॉल्व करबी लास्ट ईयर केवल देन तापरे यूनिट वाइज सब सॉल्व करबी प्रति यूनिट रो कोन कोन क्वेश्चन सही पारे आई विल सॉल्व एंड ता रिलेटेड वैल्यू एडिशन देबी आउ कोन एक्स्ट्रा एफर्ट देई हबो करंट अफेयर्स रिलेटेड थिंकर्स रिलेटेड ऐड करिगी क्वेश्चंस टाको केमिति एनहांस करि परिबा आपण मार्क को केमिति एनहांस करि परिबा दैट इज द मोटो ऑफ मेन इट इज अ वेरी जोंडे की रिगरस प्रोसेस जो थे आप पढ़ी थे भल हम माने जी पढ़ी थी एटा भल हम काली आम देखी ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल साइंटिफिक पूरा सिस्टमेटिक वे रे आमे थिंकर पार्ट को नहीं केमिति लिखिले तो क्वेश्चंस देखले इजी लागिवो बट द वे ऑफ राइटिंग शुड बी चेंज जार मार्क्स आसुनी भल सी सब ये जिनस ध्यान देवा दरकार कि केमिति देखिबे आपण माने काली आमे देखिथिले से पर्सपेक्टिव आमे केमिति आंसर बाहर करते पैटर्न वेरिएबल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पैटर्न वेरिएबल टालकट पार्सन जोंटा कि तांको विषय लिखिबा टालकट पार्सन पैटर्न वेरिएबल केते टाइप्स रो बेसिकली करिथिले देन फाइव टाइप्स रो पैटर्न वेरिएबल आमे काली वन बाय वन देखिथिले देन डिफाइन सोशल डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इंपोर्टेंट कैरेक्टर ये भी मध्य देखिथिले सोशल डिस्टेंस ये कोन आमे देखि Similarly, what is the difference between sect and cult? So आज एटा देखिबा what is the difference between sect and cult? आज भी तीन चारटा क्वेश्चन देखिबा Arvind why I left PW एक्चुअली दैट इज ए इशू मु ऑलरेडी गोटे वीडियो नहीं थी मो चैनल ललित मोहन दास अधिकारी मो ना रे गोटे जो चैनल अच्छी से मु नहीं थी मोर देन 50 मोर देन 3000 4000 पिला देखी मु अवेयर कर देउ चाहूली कि कहीं बेसिकली दे मेड द टीचर्स लाइक दे आर लेबरर्स लाइक डेली वेज वर्कर्स so that is why I have to left
basically in last moment also few classes I have I have to left. I have to leave classes. So छाड़ ସେଇଟା ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଦିल से पढ़ौଥିଲି ସେଠି I have given everything for the student, and whenever I get opportunity, and whatever way I can to help my student, to help my friends, सब जो माने भी मो कांटेक्ट आसନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାहे कि भाई तांको लाइफ भलरे रहू खुशी रे रहू मोर कंट्रीब्यूशन तांको लाइफ रे रहू सो सेही प्रोसेस रे एटा भी अछि ओके सेही प्रोसेस रे ओएस हब रे भी आप माने सब किछि पाइबे एंड दैट इज एवरीथिंग टू मी कहीं मुझे मु फील्ड रे ही लाइफ मोर जाइए तो मु या छड़ा आ कि जानी तो मु निजे प्रिपेयर करुँगी देन तापरे ए लाइन को आसिक पढ़ेवा दैट इज पढ़ेवा मोर गोटे पैशन आ मु एंजॉय करे जिते पिला सिलेक्ट हुंती जो तांकर जो कहानी तांकर जो एफर्ट एवं तांकर सहित मु जो एफर्ट रे किछि हेल्प करि सेटा बेटर and forget about the PW they will come and go they are coming basically expand their business and this process some that is we have so say ତାଙ୍କର କରୁ yes Priyanshu very good ବୁଝିଗଲ SP अरविंद तो PW छाड़े PW कथा भूली जाओ basically they are till now they are selling my videos my recorded videos and everything they are doing unfair but some तुम्हें कहे सर कहीं आपण केस करना केस करवा बहुत बड़ जिनस कहीं लेट देम डू मोर नॉलेज अच्छी नॉलेज अच्छी ताको मु शेयर करी आपण माने एंड दैट इज द प्रोसेस लीव इट कहीं एते स्ट्रेस नबा एते पीस आमे बंच तुमको समस्त खुशी चेहरा हुई यार दैट इज व्हाट आई कैन डू मो कंट्रोल जोटा अच्छी सेटा ही so what is the difference between sex and cult sex and cult are two terms often used in the context of religious or spiritual movement but they have distinct characteristics and implications have distinct and implications okay so जब देखिबा जनक भितरे यांक भितरे बेसिक डिफरेंस अछि religion हो or spiritual organizations हो or their societal तो देखिबा बेसिकली आमर जदि आम नॉर्मल कॉल्स एंड यार डेफिनेशन लिखिदबा yes SV yes yeah you will get to talk you can call me or WhatsApp me मो तुम नंबर दे दूची this is my personal number or you can contact office number OAS of office रे contact करि परिबो 8926232634 ऑफिस कांटेक्ट भी मध्य करि परिबो तुम टाइम अनुसार करि परिबो yes SP you will surely get everything मो नंबर दे देली से अनुसार WhatsApp कर दबो किंबा ये कर ओके ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଇ एम यस SP जोंडे की 242 मार्क्स कहले 242 ऑप्शनल सिलेक्शन हो नीर प्रिपरेशन ऑप्शनल प्लेज ए गेम चेंजर वाला काम करे खाली जीएस ऑप्शनल खाली एमती पढ़ी जाएगी सिलेक्शन हेनी 242 50 260 एमती बहुत पिला मो पाखु आसिले जी की रखुंट बट दे आर नॉट गेटिंग इन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जाम इज डिपेंड ऑन द ऑप्शन the extra 30-40 marks or 30-50 marks you are getting in the optional let's say if somebody is scoring 320 this year 337 is by 60th rank so people are getting 330 320 300 and you are getting 250 240
that means that 50-60 marks gap was a huge. Okay, that is huge. That you need to be basically try. Then तुम भावनी कि मु 242 रखिदेली आउ थरे पढ़ी देबी 242. That is a fundamental difference. That is a fundamental issue. Yeah, fundamentally you have understand everything, or you are going to understand. The thing is, if you understand the things clearly, then you can basically change your writing skill or everything. But if you are not understand the things clearly, then it is very difficult for you to superficially know the things. So outer perspective देखिए कि तुम्हें भाबियो कि मु बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देबी खाली हे जिवो काइना क्वेश्चन के आडे सडे बुझेले मार्क 40-50 मार्क रो मार्क कोन 4-5टा क्वेश्चन आडे सडे लेखिले चेंजेस हे 4-5टा क्वेश्चन. Yes, 360 is very good mark. 350, 360, very good. That for that you need basically clear understanding, pura conceptual clarity, and basically writing skill. Writing skill भी सेमती थिबा दरकार. Then only तुमे पाई परिबो एटाको केमती. तो प्रियांशु ऑप्शनल कि केमिति भलो मार्क्स रखी हबो तार गोटे वीडियो नेबी ये रे माने स्टार्टिंग रु नेबी कि केमिति फंडामेंटली केमिति स्ट्रांग करी कि नै हबो काइना 300 मिनिमम रखियो पड़िबो. ते बिलीव करि परिबो नै वर्ष सिलेक्शन जो माने हेइचंदी जो माने सिलेक्शन हेइनी खाली ऑप्शनल जदी कंपेयर करबी माने बेसिकली जो माने 270 पर्यंत भी ऑप्शनल रखछन 280 रखछन ता ऊपर को जो माने रहिचंती किछि पिला अछंती जणे दिजण अछंती कि 200 278 या 76 देखैछन बट सेटा रिजर्वेशन वगैरह अछि तांकर ठीक सेति में हेल्प करि बट ओवरऑल 80 प्लस 290 प्लस 300 जो मान रखछंती प्राय ऑलमोस्ट सिलेक्टेड बहुत रेयरली जणे अधे अछि जो 297 रखिछि तार सिलेक्शन हेइनी काइना बहुत ही खराब मार्क अछि तार जीएस रे खास करके जीएस पेपर 2 रे. ओके देखिबा तो देखो ए क्वेश्चंस रे कोन ना मु डेफिनेशन जते लिखिबी आगे थ्योरी को नै आसिली. So royal states basically distinguish between church, sect and mystic. That is called the three types of religious organ. A church is a large, formal and closely linked to the state. A sect kono na smaller. Sect hela gote smaller part. Okay, sect is a smaller, exclusive and protest group that break away a cult or a mystical movement focuses on individual religious experience and new individual. So basic difference बुझी पाला. तो मु एठी कोन करली एठी क्वेश्चन केमिति आंसर देली तुमको मु डायरेक्ट डेफिनेशन लिखलिनी justifiable definition लिखली which given by something. That is a basic basically तुमे देखिबो डिफरेंस आमे पाइलु. Sure, I'll upload one video. So Max Weber linked sect with voluntary membership, and personal commitment. Max Weber कहले sect को voluntary membership. तो तीनटा जिंस कहले cult, sect and चली mysticism को कहले जोंडे की cult भी को church डिफरेंस डिस्टिंग्विश चर्च सहित चर्च कोना गोटे बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये कि चर्च से समय कोन फंक्शन करथला एज स्टेट भले फंक्शन चर्च डोमिनेट करूथला सोसाइटी को जो समय हमर कॉन्स्टिट्यूशन नथिला डेमोक्रेटिक सेटअप नथिला तापर सेक्ट हला स्मॉलर एलिमेंट तार छोट पार्ट एक्सक्लूसिव एंड प्रोटेस्ट ग्रुप जोंडे कि चर्च रे गोटे छोट पार्ट ब्रेक अवे हे कि आसी देन कल्ट हला बेसिकली जेमती कल्ट ऑफ जगन्नाथ चली इंडिविजुअल रिलीजियस एक्सप्रेशन कि जगन्नाथ अराउंड एवरीथिंग उड़ीसा रे जो इंडिविजुअल गॉड अराउंड रे बोलुची. ओके सो ये तीनटा कहले
रॉयल नेक्स्ट फेवर कहले कि सेक्ट सेक्ट विथ वॉलंटरी मेंबरशिप एंड पर्सनल कमिटमेंट and contrasting them with churches where membership is often by birth church ର member ହବା ପାଇଁ ଏଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ सोसाइटी କଥା କୁହାଯାଉଛି पेपर 1 ରେ ଆମେ ପଢିବା कि यूरोपियन सोसाइटी केमिति थिला केमिति डेवलप होला सेठी सोसाइटी जे साइंटिफिक स्टडी ऊपर देन बेंथन जॉनसन मध्य कहले 1960 डिफाइंड ए सेक्ट एज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सेक्ट एज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन that sees itself processing of monopoly of religious while a cult is a group that accepts religious pluralism and emphasizes personal बुझीगला तो ऑलवेज तुम्हें देखियो किए कौन कहले जॉनसन बेंथन या बेंथन जॉनसन 1960 रे सेक्ट एज ए रिलीजियस ऑर्गन सेक्ट कौन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ओके प्रियांशु सो कौन कहले ना सेक्ट एज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कि गोटे मोनोपोली रिलीजियस ट्रुथ उपरे गोटे बेसिकली पर्टिकुलर बिलीफ उपरे से माने थांदी व्हाइल कल्ट हैला कोन ग्रुप कि गोटे जेमिति हमर जगन्नाथ कल्ट बुझुछ कल्ट ऑफ जगन्नाथ एवरीथिंग इज सराउंडिंग द कल्ट सेथर रिलीजियस प्लुरालिटी अछि आमे सबु रिलीजन जाई कि जगन्नाथ पाक पूजा करिया जाउछु जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ तो बेसिकली एवं से तुम पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छी तुम फील हुए कि भाई जगन्नाथ मंदिर गला पर आम किसी किसी फीलिंग्स आसे से जिनस आम देखू मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखा ये डेफिनेशन फॉरेन कॉन्टेक्स्ट कहीं आम जीएस पेपर 1 रे जीएस पेपर 1 पढ़ू फॉर बेसिकली थिंकर बेसिकली आम करवा न करिले माने पाप हब ये देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट सेक्ट हिंदू एमती एग्जांपल है आर्य समाज रिफॉर्म चाहूले भितर लार्जर रिलीजन ग्रुप ता भितरे कबीर पंथ लिंगायत सेक्ट राधास्वामी सत्संग aimed at purify or reform existing practices but they are under their sect particular section within a group within a religious group अरे प्रियांशु 80 ना 280 प्रियांशु 80 ना 280 थिला मोर भाई रो ना कोन कहलो प्रियांशु तब जी 280 थी 80 हेले सिलेक्ट आउट ऑफ 500 80 so I think 280 थिबो मैं टिके मार्क रो मो भाई को ना कोन ओके बुझी पालो डेफिनेशन एबे सेक्टर डेफिनेशन आउरी क्लैरिटी से पालो नहीं देन कॉल्ट्स ब्रह्म कुमारी ओशो जानिचो रविशंकर द आर्ट ऑफ लिविंग ये बेसिकली इंडिविजुअल एनलाइट ना सम आइडिया तारी अंडर ए ये चलीची often transcending traditional often and transcend traditional
तो कल्ट एंड सेक्ट रो डिफरेंस पाइला तो हमें ओवरऑल वर्ल्ड कांसेप्ट देखिले इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो हमें रही गले distinguishing sect and cult. Distinguishing sects and cult. Sects are subgroups. Sects are subgroups or faction or subgroups or factions that have broken away a larger religious organization due to difference in beliefs, practices, or interpretations of the main. Okay. देखो मु कौठी आनी कि डेफिनेशन डिस्टिंग्विश करिया पई डेफिनेशन आमे एठी लेखिलो सो आमे आगे थिंकर रो इंक्लूड देलु इंडियन कॉन्टेक्स्ट तार एग्जांपल देलु तापर एठी तो सेक्ट्स आर द सब ग्रुप्स और फैक्शंस दैट हैव सेक्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड सेक्शन सेक्शन माने गुटे पार्ट गुटे सब ग्रुप्स ओके सेक्ट्स आर सब ग्रुप्स और फैक्शन दैट हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम ए लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डिफरेंट beliefs due to difference in beliefs, practices, interpretations of the main religion. कहीं जेमिति बुद्धिज्म आसला बुद्धिज्म विषय बहुत सारा ग्रुपिज्म हैला देन सब ग्रुप ओके कहीं ना से माने इंटरप्रेट कले बुद्धा को किए टीचर बुद्धा को इंटरप्रेट कला किए बुद्धा को एज ए गॉड हिसाब रे इंटरप्रेट कला डिपेंड करे इंटरप्रिटेशन ऑपरेशन रे बिलीफ अनुसार प्रैक्टिस जेमती बुद्धा को किसी इमेज वर्शिप कले बुद्धा को किसी माने मूर्ति पूजा कले स्तूपा बनैले जोटे कि महायाना बुद्धिज्म और हिनायना वाले बुद्धा को टीचर भाविले बुद्धा को एज ए नॉर्मल बेसिकली एनलाइटेंड पर्सन भाविले देन मेंबरशिप इन ए सेक्ट इज यूजुअली बाय चॉइस नॉर्मली तार मेंबर किए हबो चॉइस जहार जेमती एग्री हला एई थॉट्स अनुसार जोटा कि नॉर्मली डिसएग्रीमेंट है कि मेन रिलीजियस अथॉरिटी डिसएग्रीमेंट है कि से चाहते कि भाई गोटे इंटरप्रिटेशन से माने करथांती रिलीजन को से इंटरप्रिटेशन अनुसार से माने चलिबा पाई जेमिति गोटे हमर ओडिसा रो अलेख धर्म किंबा महिमा धर्म कथा कहूँ जो महिमा गोस्वामी स्टार्ट करते 19th सेंचुरी तो सी बेसिकली गोटे बिलीफ सिस्टम थिला से माने आइडियल वर्शिप रो एगेंस्ट से कहले भाई मूर्ति पूजा भर्ती से नथाय आमे भगवान को डायरेक्ट डाकी परिबा इक्वालिटी रे बिलीव करथिले सो सी गुटे नो आइडिया एमर्ज हला न्यू मेंबरशिप सेथरा बढ़िले देन जोटा कि भीम भोई तार प्रचारक थिले बहुत बड़ प्रचारक थिले भक्ति मु फॉर एग्जांपल जेमति कि प्रोटेस्टेंटिज्म एमर्ज द सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी प्रोटेस्टेंटिज्म एमर्ज एज a sect of Christianity during the Reformation challenging certain practices and doctrines of Roman Catholic है नहीं प्रोटेस्टेंटिज्म ये क्रिश्चियनिटी भितर गोटे एमर्ज हेले नुआ फॉर्म से माने जो ओल्ड प्रैक्टिस चैलेंज कले एंड रिफॉर्मेशन पई प्रमोट कले कहले तुमे जमती चलुछ सेमती होबनी आमे को चेंज होबा को पड़े मने अछि आमे मैक्स वेबर रो पढ़िथिबो जानिथिबो कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म से कंपेयर करथिले कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म भितरे केमिति सिमिलरिटी अछि ओके ताक भितर कंपेयर करथिले एमाने कौन करथिले प्रोटेस्टेंट जे प्रोटेस्ट करथिले चैलेंज करथिले जो प्रैक्टिस जो डॉक्ट्राइन थिला चर्च रो ताकू जो माने प्रोटेस्ट करथिले सी गुटे पर्टिकुलर सेक्शन की बाहरिले कि भाई चर्च सब जिनस काई कंट्रोल रखिबो चर्च जहाँ कहबा के जोंटे कि अनरिजनेबल आमे काई से मानिबा लॉजिकल नहले आमे काई ताको फॉलो करिबा काहे कि चर्च हाथ रे सब किछि पावर अछि ये सब डोमिनेशन एगेंस्ट माने प्रोटेस्ट करथिले प्रोटेस्टेंट देन कॉल्ड कल्ट कहा जेमती गांधी गोटे कल्ट जगन्नाथ गोटे कल्ट माने कल्ट समथिंग जोटे कि करिश्मा और तांको लीडरशिप अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है कल्ट्स आर really characterized by their charismatic leader and a small tightly group of followers जो माने डीपली कमिटेड थांती कि टू द लीडर्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जेमती गोटे ह्यूमन बीइंग गांधीजी गोटे कल्ट थिले गांधी कल्ट जेमती जगन्नाथ ना रे पूरा ओडिशा चली पूरा बेंगल चलची पूरा जगन्नाथ ना रे ही से बिलीफ अछि
तांको लीडरशिप रे सब चलछि गांधी जी नेशनल मूवमेंट रे गांधी जी गोटे चालो भारत छाड़ आंदोलन चालो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन असहयोग आंदोलन चालो आमर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओके तो ये सब लोग बाहरी चले तो गांधी जी गोटे डाकरा से लीडर एते बिलीव करता को कल्ट कह okay so membership in a cult often involves in high level of control and manipulation by the leader कहीं लीडर जहाँ कहबे से फॉलो करिवे individuals being drawn in and isolated from the main धीरे धीरे सी बेसिकली किसी लोक अच्छा जो मैंने से कल्ट सपोर्ट था से अलग सोसाइटी रु दूर जाती एग्जांपल पीपल्स टेम्पल led by Jim Jones, a notorious cult where followers were isolated and ultimately involved in mass suicide in 1978. The extreme form of cult. ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ଜିମ୍ ଜୋନ୍ସ ये ଶୁଣିଥିବ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବ ଜାଣିପାରିବ ୟା ଉପରେ ये कौन कले ना समस्त फॉलोअर को डाकिदेले ये जे कहबो गोटे जगार रहिबे गोटे एरिया रे गोटे घर भितर समस्ते रहिले समस्त को दुनियार सोसाइटी वर्ल्डली अफेयर्स रु बाहर रखी कि बेसिकली मोर मास सुइसाइड सब करले जाकि नाइन ये बहुत बड़ बड़ न्यूज थिला से समय सिमिलरली लीडरशिप एंड कंट्रोल तो फर्स्ट देखले डेफिनेशन एंड मेंबरशिप सेक्ट एंड ईयर then leadership and sects often have a defined leadership but it is generally more decentralized cults. Leadership in sects usually involves respected individuals who guide the followers based on their interpretation of the ritual. समस्ते बुझी पारुछ सोनो वांगचू यस सेटा भी कहि परिबो ओके तो लीडरशिप बेसिकली नॉर्मली जे की or decentralized compared to the cult the leadership is a sect usually involved in जो माने गाइड करे तांको फॉलोअर को तांको इंटरप्रिटेशन अनुसार तांको इच्छा माने जेमती Taoist community can be considered as a sect clear leadership adherence to the specific belief in the broader Papist Anabaptist tradition the broader Anabaptist tradition Amish community ये 16th सेंचुरी गोटे क्रिश्चियन ग्रुप थिले क्रिश्चियन ग्रुप 16th सेंचुरी क्रिश्चियन ग्रुप थिले पेनसिल्वेनिया ओहो ए यूएसए पाखापाखि एरिया रे सही थिले जेहेतु ये फॉरेन आमे ये लिखुचु माने जोंडे कि सेपरेशन करथिले पूरा अलगा रिलीजन गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी थिले जे कि बिलीव करथिले तांको हिसाब से माने चलिबे तांकर इंटरप्रिटेशन अलगा थिला दुनिया को देखि cult are characterized by charismatic and authoritarian leader who exert significant control over the groups the leaders influence hence often dictating all aspect of the followers बेसिकली लीडर जहाँ कहबे एमिति कंट्रोल आसी जाइथांती फॉलोअर माने जहाँ कहबे से एमती राम रहीम मेसेंजर ऑफ गॉड देखछन नहीं बाबा बाबा राम रहीम ता मन इच्छा जहाँ करूथला है ना बिलीफ हो एक्शन हो एक्शन विथ अदर्स फॉर एग्जांपल the Manson family led by Charles Manson is a well-known cult where Manson had absolute control over his follower leading them commit तो ये जने बेसिकली चार्ल्स मानसन ये जने ग्रुप थिला जी तांको चेहरा रे जेमती आबू सालेम गोटे थिला हमर दाऊद इब्राहिम तुमे अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह सेही बळा ये सेही बळा गोटे थिले वर्ल्ड रे
तांकर लोके तांको फॉलोअर थिले तांको पई गब्बर गब्बर भी गोटे मूवी देखी थिबो अक्षय कुमार सी भी सही कल्ट अनुसार चली थाए रिलेशनशिप इन सोसाइटी सेक्स आर ऑफन एम टू कोएग्जिस्ट सेक्स पूरा अलग है कि जानते अलग इंटरप्रिटेशन थाए बट से ताहरी भीतर सोसाइटी भीतर थाती बट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस आर अलग distinct belief practices. They may seek recognition, accept or unique interpretation, and the religion do not actively isolate themselves. Society ଭିତରେ ଥାନ୍ତି religion ତାଙ୍କୁ isolate କରେ ଯେମିତି Jewish community जोंटे कि Asiatic Jewish community ये गोटे sect sect within Judaism जोंटे कि maintain its tradition and practices while part of the broader Judaism ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି but ये टिके cult will isolate themselves from the mainstream society and may exhibit style or different but एमाने isolate हुअंती नहीं sect isolate हुअंती नहीं एमाने isolate हुअंती कि outsider इवेन किसी किसी जगह कट ऑफ कांटेक्ट कर दियंती फैमिली सहित भी फ्रेंड सहित का सहित कांटेक्ट न थाए जोंटे कि लीडरशिप या लीडर रो ऊपर ही प्योर जोंटे कि द हेवेंस गेट कॉल्ड led by Marcel Appleby isolated themselves from the society and believe in a specific arrival to take them a higher some of the both sect and cult involve group with distinct belief practice and leaders the difference la kono lies in the membership dynamics membership leadership style and the relationship and steam sect basically a branch of the main religious group ना नहीं कि डिसेंट्रलाइज है कि लीडरशिप अंडर थाए ये कि कोएग्जिस्ट करिया को चाहे बेसिकली से सोसाइटी भीतर बट कल्ट हैला सेपरेट होबा को चाहे कैरेक्टर बाय करिज्मेटिक लीडर हेतिबो बट सेंट्रलाइज कंट्रोल थाए ये लीडर ताहारी अंडर सब थाए एवं से मेन स्ट्रीम सोसाइटी रु होबा को ट्राई करे एवं दैट इज व्हाई ये आइसोलेट होबा को चाहे एवं मैनिपुलेट करे ताकर मेंबर्स मान ता मन जोंडे कि कल्ट कल्चर ओके and that is the difference you can write it down okay. the other hand sect कथा हमें देखिले cult कथा देखिले तो बुझा पड़ला ना नहीं कना कार किसी डाउट अछि yes cult may be positive and negative that's right next what is the relationship बहुत थोड़ा क्वेश्चंस आसी यूपीएससी रा भी एज वेल एज ओपीएससी रा भी कहीं ना आसीबो नहीं कहीं ना मैक्स legitimacy is a popular acceptance of a governing law or an authority popular accept governing him where is authority where is कौन कहू not a specific position in term legislation कौन माने कौन लेजिटिम माने एक्सेप्ट करी माने छोटी आउ गोटे एग्जांपल तुम देले बुझी जीव and authority and legitimacy both are interlinked legitimacy माने let's say assume करो you are a BDO a particular block which is governed by the law but तुम्हें BDO होबा तार लेजिटिमेसी के फिक्स करूची एक्सेप्ट किए करूची कि तुम ऑर्डर को फॉलो करिवा लोक किए कि पीपल एक्सेप्ट यू एज ए BDO ता माने दे आर लेजिटिमाइजिंग योर पोजीशन and they will follow your authority
नहीं अथॉरिटी जे वीडियो रे गुडे अथॉरिटी अछि एंड वीडियो को लेजिट तार अथॉरिटी एक्सरसाइज करिया पई से अथॉरिटी को को माने फॉलो करिवे पीपल फॉलो करिवे एंड पीपल शुड एक्सेप्ट दैट ए पोस्ट जो पोजीशन ए अथॉरिटी अछि पीपल मस्ट एंड एक्सेप्ट करिले माने लेजिटिमाइज करले तुम पोजीशन को लेजिटिमाइज करले आउरी टिके जदी बुझि परन आउ टिके भल से बुझि बांग्लादेश रो प्राइम मिनिस्टर थिले शेख हसीना इलेक्ट हिथिले मैं कहबे तांग पाखर अथॉरिटी भी थिला लेजिटिमेसी भी थिला पीपल इलेक्ट करी पठेले बट इलेक्शन परे पीपल रियलाइज कले कि भाई ये आमे ताकू जो अथॉरिटी देइचु से अथॉरिटी रो हकदार नो माने दे आर नॉट लेजिटिमाइजिंग कले ये अथॉरिटी रो लेजिटिमेसी याकू दबा कथा ना वी आर नॉट एक्सेप्टिंग हिज अथॉरिटी लेजिटिमाइज करिले नाही एक्सेप्ट करिले नाही अथॉरिटी को ता माने लेजिट करिले नाही त ताकू छाड़ी की फिंग नेपाल रे हला देखिले से कि अफगानिस्तान रो हला श्रीलंका रो हला ता माने कोन पीपल आर नॉट लेजिटिमाइजिंग द ओडिसा रो ब्लॉक रे वीडियो गोटे ऑर्डर पास करूची ताकू फॉलो करूचो माने आर एक्सेप्टिंग हिज राइट और रॉन्ग तो अथॉरिटी कौन कहूँ ना स्पेसिफिक पोजीशन इन गवर्नमेंट जोटा कि पोजीशन वीडियो गोटे कहली मु एंड लेजिटिमेसी डिनोट्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस व्हेयर इन गवर्नमेंट डिनोट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जेमिति देशर सीएम हबा प्राइम मिनिस्टर हबा पीएम हबा देशर पीएम हबा सीएम हबा स्टेट रे या मिनिस्टर हबा दे आर बेसिक लेजिटिमाइज करा एंड दे आर लेजिटिमाइज फ्रॉम देयर पोजीशन okay so political legitimacy is considered a basic condition for governing without which government will suffer legislative deadlock and collapse political system where this is not the case unpopular regimes survive because they are considered legitimate by small influential elite case रे थाए जेमिति मानिनियो एज्यूम करो कि किसी जगह बहुत मेजॉरिटी पीपल आर नॉट सपोर्टिंग बट स्मॉल ग्रुप बेसिकली ताकर इन्फ्लुएंस अधिक जे ओडिसा रे इंडिया रे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अछि ताकर वोट शेयर 36% वोट शेयर देन ताकर अलायंस फाइनेंस 40% पाखा पाखी 50 60% people are not supporting either they are not agreeing with or they are not opposing them or opposing them so tamane kon majority people are not supporting till then they have legitimacy kaigi those small group जो 40% group they are legitimate they are influence kaigi तांको डिसीजन ने नंबर ऑफ सीट पाई गले जोंडे दी प्राइम मिनिस्टर तो डेफिनेशन देखिबा जदे देखियो according to Max Weber authority the legitimate power authority is the legitimate power which one person or group possesses and exercises of नहले जदि legitimate power न होबो it is very important point very पूरा प्रिंट करी रखी दबो legitimate power according to Max Weber authority is the legitimate power which one person or group possesses and exercises over another means power that is accepted as a rightful by those subject to it Yala, a very important very then legitimacy is the belief of perception belief
or perception that exercise of the authority is just माने कौन belief or perception का माने कौन जोंटे कहली पीपल बिलीव कले जो ये वीडियो जो या तहसीलदार जो या कलेक्टर जो या मिनिस्टर जो ऑर्डर पास करछथि सेटा जस्ट सेटा प्रॉपर एक्सेप्ट सेति पई legitimacy is the belief or perception that the exercise of the authority is just proper and acceptable provide the moral social basis for obedience moral and social basis for obedience Agree or not power authority and legitimacy are interconnected legitimacy adds to power then it is called actually legitimate power is authority এটা সবବେଳେ মনে legitimate power নলে তুমি authority কেই ফলো করিবন ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ମିନିଷ୍ଟର ଅଛ କଲେକ୍ଟର ଅଛ ବଟ୍ ତାକୁ ପରସେପ୍ସନ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ତୁମକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ ଅଥରିଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପାୱାର with legitimacy leads to rule of formation of state governance factors or element the factors element of power provide a base to the government right or wrong गवर्नेंस गोटे स्टेट को गवर्न करिया पई पावर दरकार एंड पावर थ्रो रे एक्सरसाइज करिवो कोन अथॉरिटी गिव्स लीगल बेस legitimacy provides moral base authority legal base legitimacy moral base very important point these have separate rules today but their joining gives perfection the governance of perfection माने जदि मिसी जीवो authority सहित पावर सहित मोरालिटी मिसी देन ओनली भले लीगली तो तुम पाखरे राइट्स अछि बट मोराली तुम पाखरे राइट नहीं morally look at ठीक so role in management of state government in the management of a state authority is a real subject that is operator provides legitimate personality to the government power and legitimacy are respective power and legitimacy are respective এটা আমরা দেখলে power and legitimacy are respective means object power মানে means legitimacy মানে object বেশি ন হলে তুমি অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করবে बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा सब मन रखो the form of valid power the authority uses power as a tools get certain or decided by legitimacy hence a government the legitimacy plays the role of legitimacy objective to play करे okay view of human nature हमें देखले मैंने स्टेट गवर्नमेंट गवर्नेंस रे कोन रूल करे लेजिटिमेसी देखले ऑब्जेक्टिव रूल करे पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी ह्यूमन नेचर आर क्लोजली रिलेटेड टू मनुष्य सबले पावर जा पाकर थाए ता पाकर थाए नेचुरल इंटरेक्शन इंडिविजुअल भीतर इंस्टीट्यूशन स्ट्रगल थाए पावर स्ट्रगल इज कंट्रोल्ड रेगुलेटेड कोन पई नेचर तो जो अथॉरिटी धीरे धीरे से डेवलप करे जो सोशल टेंडेंसी गोटे अथॉरिटी डेवलप करे गोटे सोसाइटी रे पावर टूल भाया काम करे पावर गोटे टूल भाया काम करे कि
कंट्रोल करिया को हेल्प कर बट आउट टेंडेंसी देखो सेई जो सिस्टम जे बनै थिबो सोशल सिस्टम सेइथिरे सैटिस्फाई किछि न के जेतेबेले किछि थिबे जे कि सैटिस्फाई थिबे माने भाबे सिस्टम जो अछि सोसाइबल अछि सेंसिबल जस्टिफाइबल थिबो सेंसिबल थिबो सेटा लेजिटिम जस्टिफाइबल नथिबो जे सेंसिबल नथिबो इट इज नॉट okay the legitimacy not be it possible so in this way power and legitimacy are not related directly they are interrelated by authority legitimacy makes the power and authority when authority and legitimacy are very close then the authority uses less power but when authority and legitimacy lack combination with each other then authority uses more power in our absence of legitimacy power and authority are power and authority moral city autocratic rule habo ସେଠି କ୍ରୂର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ So legitimacy is a link between power and authority. I am already discussed. It conclude karibo. And any ruler can control the outer form of individual or society with power, but cannot rule over the heart of the legitimacy is heart. Hence, is clear kona power, authority, legitimacy are without power. One, we cannot establish peace, justice, and happiness. But the rule of power is more effective when it works in combination with how do reference group influence behavior side example reference group ର concept କିଏ ଦେଇଥିଲେ anyone how do reference group influence behavior sociology on reference group कौन reference माने कौन standard जोठु कि आम गोटे स्टैंडर्ड सेट करूँ से स्टैंडर्ड अनुसार आम फॉलो करूँ in sociology reference group is a group that individuals uses as a standard for self evaluation and behavior मैं देखो तुम गोटे भल स्टूडेंट थी क्लास रे तुम रेफरेंस भाई सी एमती पढ़ुचे आम एमती पढ़ु तुम माने स्टडी ये सांगसाथी थे तुम्हें जड़े भल पढ़ुव जड़े खराब पढ़ुव तो तुम्हें रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट एरिया रेफरेंस अलग अलग थाए जोटा कि इंडिविजुअल निजर सेल्फ इवाल्युएशन निजर बिहेवियर गाइडेंस रेफरेंस ग्रुप यूज बेसिकली मेटन रॉबर्ट के मेटन ये कॉन्सेप्ट देते रेफरेंस ग्रुप कैन बी नॉर्मेटिव और कंपैरेटिव and may be positive or negative positive सेटा से माने इन्फ्लुएंस करंची ये कहले कोन ना हाउ डू रेफरेंस ग्रुप इन यस समस्त कर तुम लाइफ रे देखो प्रथम पिला बेलू तुम क्या कंपेयर करके ही चलच तुमर जो एटीट्यूड तुमर जो एस्पिरेशन तुमर जो कंजम्पशन तुमर जो सोशल आइडेंटिटी भी समहाउ रेफरेंस तुम्हें क्या देखी किए प्रिपेयर करुच्ची क्या सांग साथी किए टीवी देखी सोशल मीडिया देखी देखिकी प्रिपेरेसन आग भर सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी सेमती रखापी भी आग भर कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल भल मार्क्स मिलूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस टिके क्रिस्प सिलेबस अच्छी एवं सोसाइटी जोटा कि आम समस्त जाने एवरी पिला सोशियोलॉजी इजी हो जाए ओके तो संस्कृताइजेशन जमती एटीट्यूड एजुकेशन कंजप्शन एंड सोशल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करे जमती संस्कृताइजेशन इन इंडिया
संस्कृताइजेशन कि एमएन श्रीनिवासन देइथिले सी कोन कहिथिले से स्टडी करथिले कोन ना कि भाई किसी हपर क्लास रो जो तांकर आइडेंटिटी तांकर ड्रेसिंग पैटर्न तांकर फूडिंग पैटर्न ये सब को एक्सेप्ट करिवा सिमिलरली यूथ माने सेलिब्रिटी मानक टाइप भालिया कपड़ा पिंदिबा सेलिब्रिटी टाइप रो जूता पिंदिबा तांको भलिया बिहेव करिवा ये सब कोन तुम रेफरेंस भानले ये रेफरेंस सेही भलिया हमें बिहेव करिया को लागि और बिहेवियर चेंज हो तो गोटे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन भलिया यूज कर रेफरेंस हला माने कोन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन सेइथिरे तुमर वैल्यू सेव करे तुमर एटीट्यूड सेव करे सेइथिरे तुमर एक्शन भी मध्य सेव करे तुम देखियो तुम बड़ भाई घरे थिबे बस इनिशियली घरे थिबो माने तुम बापा को आइडियलाइज करन या माँ को कि आइडियलाइज करन देन बड़ भाई बड़ भौणी को आइडियलाइज करन ये कौन करूथो तुम सेही डायरेक्शन जी तो बेसिकली एमिति हुए it serves as a point of comparison for shaping attitude values and action whether or not the individual is actually a member of the group माने तुम्हें मेंबर ऑफ द ग्रुप माने कोन मैं रेफरेंस तुम्हें देखिलो कि तुम एरिया रु जने पिला ओएस ऑफिसर हिची तुम्हें ताको रेफरेंस या तुम घर भितर जने तुम बड़ भाई हेची या बड़ भौणी अछि या रिलेटिव्स भितर जने हेची मेंबर ग्रुप भितर बट आउ जने तुम्हें देखिलो कि टीवी रो देखिलो बहुत दूर रू बहुत संपर्क किसी ना बट टीवी रो देखी कि तुम्हें हेलो तब सेठी भी रेफरेंस कैन बी इन द ग्रुप और आउटसाइड द ग्रुप so definition according to Heman actually concept first developed by Howard Heman so सेति पई यांको डेफिनेशन ता इंपोर्टेंट एंड लेटर ताको एलाबोरेट कले 1950 Heman कहले रेफरेंस ग्रुप is any group which individual compare themselves and from which they derive their standard of judgment हां ताकर जजमेंट को डिराइव करो पैटर्न कहले कोन रेफरेंस ग्रुप दोज ग्रुप which the individual uses a frame of reference for self appraisal or behavior देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कीवर्ड दीटा डेफिनेशन तुम लिखा पड़ो पिला से दीटा डेफिनेशन लिखते तुम बुझी जाइए रेफरेंस ग्रुप कौन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेफरेंस कहीदेली से रेफरेंस ग्रुप बट यू आर नॉट कोटिंग द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द सेही कंडीशन रो मार्क्स तुम नॉर्मल जीएस टाइप रो लिखि प्रॉब्लम बुझिला कौन पे टाइप्स ऑफ रेफरेंस को मैटर्स व्यू का नॉर्मेटिव रेफरेंस पहला नॉर्म्स अनुसार एक ग्रुप अच्छी जार वैल्यू नॉर्म्स आर एडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल नॉर्म वैल्यू देन सिविल सर्वेंट कथा को एबे एग्जांपल एडॉप्टेड द लाइफस्टाइल डिसिप्लिन ऑफ प्रोफेशन ए तांकर रेफरेंस ग्रुप माने विद इन द ग्रुप भितर से जोटा हवा को चाहूची सेही भलिया लोक को आइडियलाइज then comparative reference group used for comparison and evaluation of one situation or achievement when a middle class person compare their living standards those of the upper middle with those of the upper middle class जेमती sanskritization be part of comparative reference आउडला positive and negative reference पॉजिटिव माने ग्रुप्स whether individual aspire to join a college student imitating the business leader like Ratan Tata or positive negative groups ये वैल्यू को रिजेक्ट करिवो या अवॉइड माने वैल्यू वन रिजेक्ट और अवॉइड करिवो नेगेटिव जोटा कि टेलर कि अवॉइडिंग एसोसिएट पीपल or drinks or smoke negative the association मना कर reference एठी होउन so how reference to influence the behavior जोटे कि क्वेश्चन formation of attitude and values
इंडिविजुअल तार बिलीव लैंग्वेज ड्रेस नॉर्म्स ये सब एक्सेप्ट करे रेफरेंस जाऊ माने जेती खुद एडॉप्ट करियो वेस्टर्न फैशन ट्रेंड देखो हमें एक्सेप्ट सेलिब्रिटी को रेफरेंस करजु केला फॉर्मेशन एटीट्यूड एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ये रेफरेंस ग्रुप कौन गोल थाए गोल और आइडियल्स इंडिविजुअल को अचीव करने पाई अपवर्ड मोबिलिटी में पुअर स्टूडेंट मोटिवेटेड बाय सक्सेसफुल alumni ऑफ दिस जने पुअर स्टूडेंट स्कूल पढ़ुला सी आईएएस पाइगला सेटअप पर एजुकेशन कन्फर्मिटी एंड सोशल कंट्रोल नॉर्मली समस्त एक्सेप्ट करते कि सोसाइटी भितर इंडिविजुअल सब सोसाइटी जो भाया चलती से भाया सी चलो ता सहित कन्फर्म करके चलो एवं सोशल कंट्रोल अंडर ही आउ सी चाहिए जमी मानिने तुम्हें गोटे एग्जांपल देले आउरी भलसे बुझिब तुम मैरिज करूच बट सोसाइटी आमर एक्सेप्ट करुच्ची अरेंज मैरिज तुम्हें मैरिज करने को चाहूच बट सोसाइटी बाउंड्री भी रेफरेंस है कौन ये तुम से रेफरेंस कौन देख ये अरेंज मैरिज कर तो तुम रेफरेंस ग्रुप है सोशल सोशल अप्रूवल भितर अप्रूवल एंड अवॉइड सोशल डिसिप्लिन रेफरेंस ग्रुप है तारी भितर जी थी जे सोशल नॉर्म सहित चलु एग्जांपल ये दिखाई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को सी फॉलो करिवो एडॉप्ट करिवो ये आसीबो माने काम करिया रोल मॉडल एंड सोशल आइडेंटिटी जेमती पॉलिटिकल लीडर हो एथलीट्स हो इन्फ्लुएंसर हो इंस्पायर करंती पब्लिक को रेफरेंस पर्सनल आइडेंटिटी को बिहेवियर कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस people choices in products fashion or technology are influenced by a reference young people buying gadget by their favorite celebrity नहीं लाइफस्टाइल चॉइसेस फैशन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस यार एग्जांपल ऑफ हाउ रेफरेंस ग्रुप केमती इन्फ्लुएंस कर तुम बिहेवियर को फॉर्मेशन एटीट्यूड वैल्यूज एस्पिरेशन एंड मोटिवेशंस conformity and social control role model and social identity consumption and lifestyle एग्जांपल देखिए इंडियन कस्ट अर्बन यूथ देखिए चाहूँगी बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स एज यूपीएससी और आईआईटी एग्जाम एडॉप्ट करिया बिहेवियर सक्सेस कैंडिडेट लोअर कास्ट मेंबर बेसिकली जे चाहूँगी कि अपर कास्ट रेफरेंस ग्रुप सांस्कृटाइजेशन The reference group play a crucial role in shaping the individual identity, aspiration, social behavior. Serve as a mirror for self-evaluation and model for social learning, thereby linking personal development broader. Sir, basically few questions आमे आज देखिले आज पे एति थाउ. I hope तुम्हें enjoy करूथुबो. समस्त लाइक शेयर कर दियो सांग साथी सहित सो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो माने मेंस दउचंती केवल 50 जन स्टूडेंट होची कने जने किए कॉल करिवो ये करिवो ताको कथा है कि ताको सहित करिवा भी पड़िवो सो जे चाहूचंती रियली मेंस मेंटरशिप रे एनरोल करंतु देन किछि क्लासेस एही भलिया ही रहिबो किछि देन ए पीवाई की सरले मु वैल्यू एडिशन यूनिट वाइज आनिबी और यूनिट वाइज आथिबो तो वैल्यू एडिशन पाई जिवो आज एटा एति की थाउ काली देखिबा ओके तो सोशियोलॉजी मेंटरशिप आपण माने एवं सोशियोलॉजी गोटे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होईची जोटा कि काली टू स्टार्ट होईची जो माने ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहिले जॉइन करि परिबे सोशियोलॉजी फाउंडेशन को सोशियोलॉजी मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज मेंटर मात्र 4000 अछि टेस्ट सीरीज एंड मेंटर तो ये दीटा जदी कॉम्बो जी नै मात्र 7000 पड़िबो तो सेटा भी चाहिले जॉइन करि परिबे सोशियोलॉजी मेंटरशिप रे मेंस पर्सपेक्टिव प्रिपरेशन एंड फाउंडेशन का बेसिक लेवल स्टार्ट हबो जोटा कि तुमको फंडामेंटली फाउंडेशन भी एवरी वीकली टेस्ट हम तुम माने क्वेश्चन हम पीवाई क्यू एज वेल एज टॉपिक अनुसार क्वेश्चन दिया कौन कौन क्वेश्चन सेटा भी चाहिए प्रिपरेशन मेंस पर्सपेक्टिव रे
मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं पारिबे या मेंस रो टेस्ट मेंस रो मेंटरशिप 7999 अछि टेस्ट सीरीज खाली अछि 5000 सेटा भी नहीं टेस्ट सीरीज भी नहीं पारिबे टेस्ट सीरीज रे मॉडल आंसर सहित आपण इंडिविजुअली गाइडेंस पाई पारिबे जदि मेंटर ऐड तो जदि जॉइन करिया चाहउछथि सांग साथी मेंस रो रिजल्ट पाई वेट करतु नहीं रिजल्ट पाई वेट कले आपण लॉस हबो that's it for today if anything any doubt you have 89 ये नंबर को कॉल करिवो एंड व्हाट्सएप मध्ये एनी डाउट लेट नो जय जगन्नाथ नमस्कार भगवान